Hello everyone to all UGC-NET set aspirants. In this video lecture, I will cover Research Aptitude Unit with respect to statistics. All PYQs we will cover in it, which were asked in August-September 2024 examination. I will also inform you from where you will get free PDF of all shifts of August-September 2024 examination along with this book. So do watch this video till the end. Before moving on to the questions, I want to inform you that there is a playlist on my YouTube channel named as August-September 2024 Paper 1 PYQs with Solutions. This is the name of the playlist. So इस playlist में जाके आपने ये वाला एक वीडियो है wherein I have done full analysis of research aptitude. In this video, I have discussed each and every topic for research aptitude which is important, which is trending, जिसमें से आपको definitely questions जो हैं आने वाले हैं and you're not supposed to leave any topic from this video. Okay, so go and watch this video. I will provide the link of this video in the description box of this video also. Now, all those who will be giving next UGC-NET set examination, you need to understand that the statistics hai in research aptitude, that has become a very important topic. Now, many questions are being asked from statistics in research. So, for that, I have provided chapter 1 that is named as statistical methods along with this book. So statistical methods जो हैं, you should know there are three types of statistical methods: measures of central tendency, measures of dispersion and measures of skewness, right? तो ये तीनों आपको बहुत अच्छे से prepare करने हैं and I have covered the content related to these three measures along with their definitions and formulas in this PDF, that is chapter 1 PDF statistical methods. तो इस PDF को बहुत अच्छे से elaboratively prepare कर लेना है. So herein I am discussing what are the measures of central tendency. So you should know कि measures of central tendency में क्या क्या cover up होता है: arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, and जो positional measures are, they are median, mode, quartiles, deciles and percentiles. Okay, I have also covered measures of central tendency in this book also. इस book में आपको page 26 के ऊपर सारे measures of central tendency, उनकी definition जो है with formulas, that is also covered. So you must prepare from this book also, page 26. तो ये बहुत अच्छे crisp notes हैं आपके हाथ में, from where you can prepare easily, right? The next is measures of dispersion. Now measures of dispersion also I have covered in this book on page 26. So measures of dispersion कौन कौन से हैं, you should know: mean deviation, quartile deviation, standard deviation and range. These are measures of dispersion. And measures of skewness also I have covered in this book on page 26 and 27. ठीक है, तो ये already important topics थे and these are again trending topics, so you must prepare them very nicely. ठीक है, properties of arithmetic mean, properties of standard deviation, everything is given in this book on page 26, 27 and 28. Skewness भी explained है, prepare it very nicely. Carl Pearson's coefficient of correlation, do it very thoroughly, very nicely, so you will be able to attempt all the questions related to statistics that were asked in August-September 2024 examination if you are fully prepared with the content from this book plus this PDF, that is chapter 1 PDF statistical methods. Now let's do the questions. Now this is the latest question which is taken from 3rd September 2024 examination shift 2. Identify the measures of dispersion. Now this question is very easy if you are prepared on the content nicely. अगर आपने इस book में से भी अच्छी preparation की है, you are able to crack these questions very quickly on your final day. Okay, so you can see over here mean deviation, yes, this is a measure of dispersion. Standard deviation, yes, this is a measure of dispersion. And range, you know this, okay, mean deviation, standard deviation, quartile deviation and range, these are the measures of dispersion. Clear? So points A, C, D you can see over here in answer number 3. So this is the answer to this question. And what is median and quartile? Let me know in the comment section of this video below. Median and quartile, they belong to which statistical method? Now we have another question which is taken from 28th August 2024 shift 1. The level of the question is not difficult. Let us read the question very carefully. If you are prepared on the content
completely very nicely, you will be able to crack such questions. Okay, arrange the following statistical measures. अब ये सारे statistical measures हैं, कौन कौन से? Measures of central tendency, measures of dispersion, right? So decile, median, quotile, percentile, ये what are these? These are all statistical measures. तो question में क्या पूछा? You have to understand it carefully. Arrange the following statistical measures in increasing order. So this is given. Sixth, decile. Decile you should know. Decile divides the series into 10 equal parts. Median जो है, it divides the series into 2 equal parts. Third quotile, that means ये थर्ड कोटाइल है. कोटाइल्स बेसिकली डिवाइड करते हैं सीरीज को इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, तो उसमें से हमने यहाँ पे Q3 की बात की है. 67th परसेंटाइल. अब परसेंटाइल बेसिकली क्या होता है? डिवाइड्स द सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. ठीक है, ये सारी एक्सप्लेनेशन जो मैंने इस बुक में दी हुई है एंड जो डिटेल है वो चैप्टर 1 PDF जो आपको प्रोवाइड किया उसको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, पढ़ लेना है थॉरोली. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इस बुक में एंड उस PDF के बाहर से नहीं आया है. यू कैन ऑल्सो सी. ठीक है, आई हैव टेकन दीज UGC-NET क्वेश्चंस ओनली. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब यहाँ पे डिसाइल, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल की फॉर्म में दिया हुआ है. सो इनको इक्वेट करने के लिए वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन इन कॉरस्पॉन्डिंग टू परसेंटाइल. ठीक है, हम इन सभी चारों स्टैटिस्टिकल मेजर्स को हम परसेंटाइल की टर्म्स में लेकर आएंगे. राइट, अब सिक्स्थ डिसाइल जो है इट कॉरस्पॉन्ड्स टू 60th परसेंटाइल. यू शुड नो दिस. क्लियर. मीडियन जो है इट रिलेट्स टू, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू 50th परसेंटाइल, क्योंकि जो 50th परसेंटाइल है वो भी डिवाइड करता है सीरीज को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड जो मीडियन है दैट आल्सो डिवाइड्स द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. क्लियर. Then third quotile, it corresponds to 75th percentile. You should know this. ठीक है, 67th percentile लिखा है. This percentile, it what it represent? It represents कि 67% of the data जो है falls below it. तो this is 67th percentile, same as it is लिखा हुआ है. ठीक है, तो अब यहाँ पे what they have asked, statistical measures को increasing order में arrange करना है. तो do it very carefully. 50th increasing order means small to larger value. 50th B will come, that is B median, you can see over here. Then 50th के बाद 60th percentile, A will come over here, that is 6th decile. Then after that D point, 67th percentile, it will come over here, and last में C आएगा, that is 75th percentile. So these questions are very easy, right? Prepare the content very nicely. Next time also आपको इस type के questions definitely देखने को मिलेंगे for sure, but you have to be very careful. यहाँ पे next time हो सकता है आपको question में लिखा हो decreasing order. ठीक है, and यहाँ पे आपको different जो है terms यहाँ पे दी होंगी. So you have to be very careful while attempting other questions. Now this is another question which is taken from 30th August 2024 shift 1. Again over here what is asked, arrange the following statistical measures in increasing order. Question को ध्यान से पढ़ना है. Now this is a homework question for you. You can see over here in A 37th percentile is written, B first quartile, C median is written, and D third decile is written. You have to comment the answer from here, from these options in the comment section of this video below. This is your homework. Attempt this question, prepare the content confidently. ठीक है, इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है, नहीं छोड़ना है थिंकिंग कि हम कर लेंगे, हो जाएगा. नो, do yourself, try to do yourself. In case you have any problem, you can always WhatsApp me on my number at 975000491. Okay. Now next question, it is taken from 2nd September 2024 examination shift 2. Right, so this question is with respect to geometric mean. अब geometric mean आपने अच्छे से prepare कर लेना है. Measures of central tendency के under it is covered, and you can cover this. It has already been covered over here in this book on page 26. We have covered geometric mean. इस बार geometric mean का question आया, तो next time harmonic mean उसका formula अच्छे से prepare करना है. It has been covered in this book on page 26. Plus जो मैंने आपको PDF provide किया उसमें मैंने formulas, definition and relationship between geometric mean and harmonic mean उसके ऊपर भी आपको explanation वहाँ पे दी हुई है. Now let's discuss this question. The geometric mean of the number 9, 12 and 16 is. Now there are 3 numbers given over here. ठीक है, अगर आपको formula आता है तो you can quickly do. Otherwise आपको लगेगा कि ये कुछ नया ही topic है, नया ही question पूछ लिया इस बार NTA वालों ने, तो it's nothing like that. It's only about your preparation. If you are preparing the content, you will get that success. If you are not preparing the content, nobody can help you out. Okay.
सो अब ज्योमेट्रिक मीन का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स और वैल्यूज, यू कैन से। यहाँ पे प्रोडक्ट किया है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना, x1 इंटू x2 इंटू x3, जितने भी नंबर्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, यहाँ पे कितने दिए हैं, 3 नंबर्स गिवन हुए हैं, यू कैन सी n इज इक्वल टू 3। तो nth रूट निकालना है, nth रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज इन अ सीरीज को लेना है, उनका nth रूट निकालना है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 3 है बिकॉज 3 नंबर्स आर गिवन ओवर हियर। सो x1 इज इक्वल टू 9, x2 इज इक्वल टू 12, x3 इज इक्वल टू 16, क्लियर। तो 9 इंटू 12 इंटू 16, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, क्विकली जो है आपने मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्यूब रूट लेना है इस नंबर का, रीजन देयर आर 3 नंबर्स, ठीक है, एंड आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू दैट यू मस्ट प्रिपेयर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स एटलीस्ट 1 to 20 नंबर्स तक आपको प्रॉपरली जो है लर्न होने चाहिए। डेफिनेटली दीज क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स डू हेल्प यू इन सॉल्विंग योर मैथ्स प्रॉब्लम्स ऑल्सो, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट को भी इसका क्यूब रूट आता है 1728 का, that is 12, वो quickly इसका आंसर जो है मार्क डाउन कर लेगा। So the level of the questions are really very easy. Only point is whether you are preparing the content or not. Now note down the homework for research aptitude. If you want to score full marks in research aptitude, the strategy is very simple, very easy, okay? So you have to focus upon trending important topics, right? August, September 2024, all shifts PYQs, I have set them at one place topic wise and I have explained them also. मैंने एक एक ऑप्शन को भी एक्सप्लेन किया है एंड बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं, हर एक चीज उनमें मेंशन की है with detailed explanations. So I'm going to provide this PDF to all those students who have bought my book. So you can WhatsApp me on this number for this PDF. Okay, you will get this PDF free along with this book so that your preparation is complete. Then June 2024 PYQs, जो हमारा जून 2024 में एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था, जितने रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे, they have been set at one place with detailed explanations, and also I will provide you a YouTube video link discussing all these questions in the description box of this video. Okay, then December 2023 PYQs, June 2023 PYQs, all these important PYQs from all shifts have already been analyzed and covered in this book, each and every question. For example, validity, abbreviations, threats to internal validity, APA style, any question, ethnographic research, longitudinal research, reliability, ठीक है, and questions from 2014 to 2023, all important questions have been covered in this book, so you have to prepare the explanations very nicely, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है स्कोर करने के लिए, ये वाला जो PDF है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है। इस PDF को यू मस्ट प्रिपेयर मिनिमम 5 to 6 times बिफोर योर एग्जाम, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से आपको कोई टेंशन ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर। एनालिसिस मैंने अभी इस वीडियो में स्टार्टिंग में पहले डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। सो सिंसियरली इस PDF को अच्छे से प्रिपेयर कर दो। रिसर्च एप्टीट्यूड का आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, व्हाट आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर, यू जस्ट डू दिस, ठीक है। देन प्लेजरिज्म PDF आई हैव प्रोवाइडेड यू अलॉन्ग विद दिस बुक, इस बुक में मैंने कवर अप किया, उस PDF के बाहर से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इनफैक्ट आया ही नहीं है, and all the questions related to this topic I've already covered in these PDFs, in this one and in this one, segregate कर दिए सारे questions, ठीक है। तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, प्लस मैंने आपको एक टेस्ट भी प्रोवाइड किया है on this, and I will also provide you a YouTube video which I will provide you the link of that video in the description box of this video. तो उस वीडियो को भी अच्छे से देख लेना, समझ लेना, उस PDF को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, कोई भी क्वेश्चन इस PDF से, इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। नाउ बिकॉज स्टैटिस्टिक्स जो है अब इसका काफ़ी फोकस है इन रिसर्च एप्टीट्यूड इन यूनिट 2 ऑफ पेपर 1, सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल दीज PDFs अलॉन्ग विद दिस बुक, ताकि आपकी स्टैटिस्टिक्स की भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए फॉर रिसर्च एप्टीट्यूड। स्टैटिस्टिकल मेथड्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस, दे हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, देन कोरिलेशन, रिग्रेशन हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस PDF, probability distributions you have to focus upon binomial, normal and Poisson distributions, exponential भी even explain किया इस PDF में। रिसर्च मेथड्स में यहाँ पे इस PDF में फोकस है ऑन probability sampling methods, ठीक है, सैम्पलिंग जो मेथड्स है हमारे उनके ऊपर, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यू हैव टू प्रिपेयर द प्रोसेस, इंटायर प्रोसेस,
टू टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट, लेफ्ट राइट टेल, ये सारा कुछ आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है. देन टाइप्स ऑफ एरर ऑल्सो यू मस्ट प्रिपेयर दैट. ठीक है, टाइप 1 error, type 2 error. Then various types of tests are there, which are parametric tests, which are non-parametric tests. Everything has been covered in this book. ठीक है, so ये आपकी complete preparation है. Do this, prepare this, and WhatsApp me on my number when you have prepared this book content, plus you have prepared all these PDFs. Okay. मैं आपको इस बुक के कुछ फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती हूँ. लाइक इन दिस बुक यू कैन कवर योर सिलेबस ऑफ पेपर 1 थ्रू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद द कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशंस. ठीक है, सारे यूनिट्स को सेग्रीगेट किया है, यूनिट वाइज भी एंड टॉपिक वाइज भी. टॉपिक वाइज भी फॉर एग्जांपल टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन यूनिट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फ्रॉम 2014 से लेकर 2023 तक सभी क्वेश्चंस को सेग्रीगेट किया है, बाइफरकेट किया है. देयर आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर. एंड ज़्यादा जो एम्फेसिस दिया है इस बुक में वो जून 2023, दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन क्वेश्चंस के ऊपर दिया है. प्रॉपर जो एनालिसिस करके जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस थे उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैव बीन कवर्ड इन दिस बुक. ऐसा नहीं कि छोटी छोटी एक्सप्लेनेशंस हैं, प्रॉपर जो है टॉपिक्स को फुली एक्सप्लेन किया है. प्लस आपको ऑल शिफ्ट्स जून 2023, ऑल शिफ्ट्स दिसंबर 2023 के फ्री पीडीएफ नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हैं अलॉन्ग विद दिस बुक. वन मोर स्पेशल अट्रैक्शन टू दिस बुक इज कि जो अगस्त सितंबर 2024 एग्जामिनेशन हेल्ड हुआ था उसके सारे शिफ्ट्स के जो पीडीएफ्स हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस. ठीक है, फॉर एग्जांपल टीचिंग एप्टीट्यूड के अगस्त सितंबर में जितने भी क्वेश्चंस आए थे दे हैव बीन सेट इन वन डॉक्यूमेंट. उनके विद एक्सप्लेनेशंस, ऑप्शंस को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ये सारे फ्री पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे इस बुक के साथ. एंड देयर इज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑल्सो. ठीक है, जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर पेपर 1. सो नो नीड to worry at all. Plus I have also provided you PDF of 18th June. जो 18th June 2024 को एग्जामिनेशन हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, उसके दोनों शिफ्ट्स, both shifts 1 and 2, free PDF notes are provided to you with detailed explanations. तभी मज़ा आएगा आपकी प्रिपरेशन का. So comment on this video if you want to prepare with me, like my video lectures, subscribe to my channel because जिन्होंने subscribe नहीं किया हुआ you won't get the notification when I upload my video on YouTube. So you must subscribe my channel, comment on my video. Yes, you want to prepare with me or you don't want to prepare with me, right? And do comment how did you find my video lecture so that we can come up with new video ideas for you so that you can prepare very nicely. Now, all those who are interested, you can order this book from Amazon or Flipkart. I have provided you the link of Amazon in the description box of this video. You can click on that link and place your order. So if you're interested to prepare with me, you can WhatsApp me on my number, that is 97500000491. I will add you to my group of UGC-NET Paper 1 preparation. So all the very best for your examination.